Namaste. Let us find out how to attach lead in and lead out manually to all the pieces in a nested layout. देखते हैं लीड इन और लीड आउट मैन्युअली लेआउट में किस तरह से अटैच किए जाते हैं. Before we go ahead, let us find out how to define default length and style for lead in and lead out. तो उसके लिए हम मटेरियल फाइल में चलते हैं. मटेरियल फाइल इज लोकेटेड इन सी ड्राइव G0X इन फोल्डर. इसमें आपके अलग अलग मटेरियल ग्रेड और थिकनेस के लिए अलग अलग कटिंग पैरामीटर्स जैसे कि टूल डायमीटर, लीड इन, लीड आउट वगैरह स्पेसिफाई किए जा सकते हैं. तो कॉलम नंबर F आपको लीड इन की लेंथ बताता है. कॉलम नंबर G यहाँ पर आप लीड आउट की लेंथ टाइप कर सकते हो. अपने अलग अलग मटेरियल और थिकनेस के लिए आप अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं. एक साधारण नियम इस तरह से है कि ऑक्सीफ्यूल या प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस के लिए एक कर्व बीम डायमीटर जो आपका है कॉलम नंबर डी में, उससे लीड इन और लीड आउट कम से कम 2 गुना होना जरूरी है. द लेंथ ऑफ द लीड इन एंड लीड आउट should be at least twice of the tool diameter specified in column B in materials file. You can add your own material grade and thickness along with the necessary cutting parameters. Description of material file is available elsewhere among the other documentations. Now let's go back to the main software. यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि स्टाइल कैसे डिफाइन की जाए. Go to the options, go to the tool path, go to leader type. यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लीड इन लीड आउट की स्टाइल डिफाइन करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं. ऊपर लीड इन है, नीचे लीड आउट है. लेजर कटिंग के लिए 90 डिग्रीज वाला लीड इन ठीक रहता है. ऑक्सी प्लाज्मा कटिंग के लिए इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अटैचिंग लीड इन एंड लीड आउट. नाउ लीड इन लीड आउट करने अटैच करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप राइट क्लिक करें. Click on this option called lead in and you can see these parameters for attaching lead in lead out temporarily. इस केस में ये कमांड चलाते वक्त आप लीड इन लीड आउट की लेंथ बदल सकते हैं, स्टाइल भी बदल सकते हैं. तो यहां मैं लीड इन की लेंथ 3 रख रहा हूं, एक्सटेंशन 2 mm रख रहा हूं और ये लास्ट वाली स्टाइल ले रहा हूं जिसमें लाइन और आर्क दोनों दिए गए हैं. लीड आउट के लिए भी 3 mm और 2 mm और उसमें भी स्टाइल में लास्ट वाली रख रहा हूं. नाउ माय कमांड स्टार्ट्स. जब भी सॉफ्टवेयर को आपकी ओर से कोई पॉइंट चाहिए तो नीचे एक प्रॉम्प्ट आता है, सिलेक्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कटिंग साइकिल, प्रेस एस्केप टू स्टॉप. तो यहां पर जहां पर मैं क्लिक करता हूं वहां पर एक्शन ली जाएगी. लेट अस क्लिक समवेयर. कलर बदल गया, लीड इन लीड आउट आ गया. जूम करके दिखाता हूं. नाउ कमांड इज स्टिल ऑन. अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां कॉर्नर पे लीड इन लीड आउट देना है. कोई बात नहीं, जब भी आप पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक करके यू कैन स्नैप द पॉइंट. So in order to snap the point in point selection mode, click the right mouse button, enable it, click on the end point and now click on this point. आप देखेंगे लीड इन लीड आउट यहाँ पर आ गए. अभी भी मेरा कमांड चालू है. Now I want to attach lead in lead out on the quadrant point of a circle. Right click, put it on, but click quadrant over here. Now I want to click on this quadrant point, click, lead in lead out आ गए. I am going to press the escape key to stop this command. यहां पर आप देखेंगे कि लीड इन लीड आउट जिस तरह से मुझे चाहिए होल के लिए उस तरह से बनाया गया है. Now I want to repeat this lead in and lead out everywhere. As you can see, यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग होल्स मिलेंगे, अलग अलग साइज के. मुझे सभी होल्स पे ये लीड इन लीड आउट कॉपी करने हैं. So first what I will do is I'll zoom in, I'll go to this hole. ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूं. आई एम डबल क्लिकिंग ऑन द कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ लीड इन लीड आउट एंड बॉडी and I'll say yes. Please note, lead in and lead out have been copied on all the holes of similar size in the entire layout. बाजू वाले पार्ट में भी कॉपी हो गए.
but they have not been copied on this big circle because the diameter is different. However, be careful when you repeat the lead in and lead out in this manner, because when you repeat it all over the sheet, sometimes you may touch the lead in and lead out to a neighboring part. तो ये आपको देख लेना जरूरी होगा कि आप लीड इन और लीड आउट जब इस तरह से रिपीट करते हैं तो दूसरे कोई पार्ट को टच ना कर दे। इसके लिए आप लेआउट मेनू में जाके वैलिडेशन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड सी द वार्निंग्स। नाउ ऑलराइट, आपने लीड इन और लीड आउट दे दिया, स्नैप कर दिया, आपने साइज और स्टाइल भी बदल के देख लिया किस तरह से आप साइज स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यू कैन define lead in lead out the way you wish. More comprehensive menu is available over here. There are several options. You can add lead in to a point at a corner. You can define radial lead in. But right now, let us concentrate and learn about these three options: direction, line, and stock. Let's take them up one by one. Suppose I want to define lead in and lead out along a specified direction. Okay, go here. I'll say add lead in along a direction. I will click here. That is my common point. And then I'll click somewhere over here. Remember, I'm clicking far away from the lead, from the contact point. But the lead in is taken closer. Why? Because it takes only the direction in this case. Length is taken from the default value. लेकिन अगर आप length भी change करना चाहते हो, then you should use this option, where it will take line as well as direction. Sorry, it will take length as well as direction from you. Suppose I say I want to add lead in over here and I click all the way here. Now I am clicking and you will see it's a long lead in. तो यहां पर आपका लीड इन का डायरेक्शन और लेंथ दोनों आपने जैसे क्लिक किया उस तरह से ले लिया गया। The software has taken the length of the lead in as well as direction from the point you clicked on. So this is the difference between drawing a lead in along a direction and drawing a lead in along a line. Finally, sometimes you may want to optimize the cost associated with piercing. So, उस case में you may want to take the lead in from the edge of the raw material sheet. Now, there is a very specific option available here. You will click on that. I want to take it from the end point of this piece. So, यहाँ पर click कर रहा हूँ. And then I am clicking on the raw material sheet. The lead in is taken such that the piercing takes place on the edge of the sheet. And there is a similar option. Let me press the escape key to break the command. There is a very similar option to take leading from the edge of a part which is cut before. But यहाँ पर ध्यान रखना है कि this part should be handled before cutting the given cutting cycle for which you are adding lead in lead out. Make sure that part which serves as the start point for the lead in is cut before. This is necessary. Raw material stock के लिए ये option सोचने की जरूरत नहीं है. Raw material is never cut and you can take the lead in from the edge of the raw material sheet if you want to reduce the piercing load. There are some specific requirements which come up in certain cases. For example, you may want to stretch the lead in lead out. You may want to extend it. If you want to do so, select the corresponding command, say yes for extending the lead in. And I am extending the lead in here. Pressing the escape key. Lead in lamba ho gaya. Similarly, you can extend the lead out. Just use the appropriate option once you click on this command. Say no in this case. I'm not going to do it, but if you wish, you can use this command as well for extending the lead out. Finally, let me show you how to delete lead in and lead out.
See, there are two options available. One is to remove lead in and lead out from all the pre-selected pieces. यहाँ पर मैंने दो pieces को select किए हैं, highlight किए गए हैं. And I want to remove lead in, lead out from all cutting cycles, holes as well as outer boundary. For that, go to remove lead in and choose the first one, automatic. Yes and yes. सब blue हो गए, outer और inner दोनों boundary में से lead in, lead out चले गए. But suppose you want to remove lead in from a specific cutting cycle. In that case, go here, say manual, click on the common contact point here. जो पसंद किया था वो lead in, lead out को निकाल दिया गया. Press the escape key as usual to break the command. Thank you very much for your time and interest. Oh, before I forget, make sure to use validation command at the end of any manual nesting or lead in, lead out generation process. If there is any error, you will be able to see it on the screen. Now, thank you very much for your time and interest.